Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Market Mantra, Mantra. Namaskar and welcome to this edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, friends, I'm your hostess, Lalema Aneja Dang, and with me is my co-anchor in Hindi, Vishal Sharma. नमस्कार, मार्केट मंत्र के ताज़ा अंक में आप सभी का स्वागत। प्रतिदिन की तरह कार्यक्रम में हम लाएंगे आप तक आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के नवीनतम समाचार, साथ ही उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज हमारे साथ कार्यक्रम में ऑनलाइन विशेषज्ञ भी जुड़ेंगे। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा अनेजा डैंग। Thank you, Vishal. Yes, we begin with the headlines. RBI asks banks, NBFCs to release property docs within 30 days of loan settlement or pay compensation. Cabinet approves foreign investment of up to 9,589 crore rupees in Suven Pharmaceuticals Limited. And Nifty ends above 20,000. Sensex rallies for the 9th session, jumps over 200 points. भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को ऋण का पूर्ण भुगतान होने के 30 दिन के भीतर संपत्तियों के दस्तावेज लौटाने को कहा। ऐसा न करने पर देना होगा जुर्माना। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में 9,589 करोड़ रुपए तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को दी मंजूरी। और सेंसेक्स में लगातार 9वें कारोबारी सत्र में तेजी, 200 से अधिक अंक का आया उछाल। निफ्टी 20,000 के स्तर से ऊपर हुआ बंद। The Reserve Bank of India has asked all financial institutions to release all movable and immovable property documents within 30 days upon receiving full repayment and closure of personal loan accounts. RBI has said that in case of delay, financial institutions shall compensate the borrower at the rate of 5,000 rupees for each day of delay. These directions will be applicable from the 1st of December 2023. In case of loss or damage to original, movable or immovable property documents, the financial institutions shall assist the borrower in obtaining duplicate or certified copies. An additional time of 30 days will be available to the financial institution to complete this procedure, and the delayed period penalty will be calculated thereafter, that is, after a total period of 60 days. RBI has observed that the financial institutions follow divergent practices in release of such movable or immovable property documents. Bank has issued these guidelines to address the issues faced by the borrowers. The compensation provided under these directions shall be without prejudice to the rights of a borrower to get any other compensation as per any applicable law. Well, that was our first story, and we are now joined by senior economist Mr. S.P. Sharma. Mr. Sharma, welcome to Market Mantra. Thank you. So, sir, what do you make of this story? Is it in the interest of the borrowers? The Reserve Bank of India asking all financial institutions to release all movable and immovable property documents within 30 days upon receiving full repayment and closure of personal loan accounts. Yes, this is a positive move, and this is necessary for the financial regulation also. And as we are moving ahead with more and more reforms and ease of regulatory environment and also ease of doing business, so such kind of norms are adequate at this juncture to move forward as our financial systems are becoming strong and institutions are now more regulated. So going forward, I think such kind of developments are needed for the growth and development of Indian economy and for the benefit of the people and investors. All right, let's go ahead with the next news. Yes, Vishal? जी, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। केंद्र सरकार ने सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में 9,589 करोड़ रुपए तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने आज साइप्रस के मैसर्स बरहयांदा लिमिटेड द्वारा मैसर्स सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के इस प्रस्ताव को मंजूरी देने का फैसला किया। इसके तहत सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के 76% इक्विटी शेयरों का अधिग्रहण किया जाएगा। भारतीय प्रतिभूति
और विनिमय बोर्ड और भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य संबंधित एजेंसियों द्वारा प्रस्ताव के मूल्यांकन के बाद ये मंजूरी दी गई है। स्वीकृत विदेशी निवेश का लक्ष्य संयंत्र और उपकरणों में निवेश के माध्यम से नए रोजगार का सृजन करते हुए भारतीय कंपनी सुवेन फार्मास्यूटिकल्स की क्षमता का विस्तार करना है। एसपी शर्मा जी, जो फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्र में फार्मा सेक्टर में जो एफडीआई की जब हम बात करते हैं तो पिछले हम देखें तो 5 सालों में जो है तकरीबन 58% का जो है एफडीआई की ग्रोथ देखने को मिली है फार्मा सेक्टर में, और लगभग कहें तो 43,713 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है 2018-19 से 2022-23 तक के बीच में। तो ये जो एफडीआई आ रहा है फार्मा सेक्टर में, उसको आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं, और खासकर तब जब कोविड के बाद जो भारत का जो फार्मा सेक्टर है उसने पूरी दुनिया में अपनी एक छवि बनाई है, एक बहुत अच्छी छवि स्थापित की है। कितना महत्वपूर्ण मान रहे हैं इस एफडीआई को आप? देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो फार्मा सेक्टर के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि पहले आज से अगर हम कुछ वर्ष पीछे जाएं तो फार्मा सेक्टर उतना ज्यादा लुक्रेटिव नहीं था, लेकिन अभी जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, जैसे अपनी इनोवेशन, R&D और जो आइडियाज हैं जिसके बेसिस पे हम आगे इंडिजिनियस कैपेसिटीज को डेवलप कर पा रहे हैं, उसकी वजह से हमारा फार्मा सेक्टर बहुत ही लुक्रेटिव हो गया है। और कोरोना के टाइम पे खास करके जब हमने अपने ही वैक्सीन डेवलप किए तो पूरी दुनिया देख रही थी कि भारत ने कैसे जो करोड़ों की तादाद में जो इंजेक्शन जो है वो खुद ही उत्पादित किए हैं और खुद ही लोगों को लगाए हैं और कोरोना को अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है। तो हमारा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उसकी जो महत्ता है, जो उसकी शाख है, वो ग्लोबल लेवल पे बहुत अच्छे तरीके से बड़ी है, और जिसकी वजह से जो ग्लोबल इन्वेस्टर है वो काफी अट्रैक्टिव है टुवर्ड्स इंडिया फार्मास्यूटिकल सेक्टर। आपने देखा कि जो ग्रोथ है, जो एफडीआई की ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, वो बहुत ही डबल डिजिट के स्ट्रॉन्ग ट्रैजेक्टरी में है। तो आने वाले टाइम में बहुत सारी उम्मीदें हैं कि हमारा जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है वो एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर भी है, क्योंकि हम एक्सपोर्ट्स में भी जो फार्मा है वो टॉप 10 कमोडिटीज में आता है। तो आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी उम्मीदें हैं कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर है और ज्यादा अट्रैक्टिव होगा और एफडीआई का जो मात्रा है और ज्यादा इंक्रीज होगी। So, Mr. Sharma, that when we talk about the fact that India is one of the largest exporters of generic drugs, and we are promoting generic drugs even within the country through our various stores, we are also we've exported many PPE kits during Corona time. We also donated a lot of Corona vaccines, COVID vaccines to various countries. In the light of all this, do you think that this measure of opening up FDI more in the pharmaceutical sector, we are kind of strengthening our pharmaceutical base in the country? And as you just mentioned, that it does account for one of the major exports when it comes to pharmaceutical drugs. Yes, that is true that we are moving ahead with more and more indigenous development of the pharma production, and we are also becoming more and more lucrative in the global markets in the attractiveness of foreign direct investment, as we have proved that we are capable and we can do the indigenous capacities and indigenous production for our population that we have shown during the time of Corona. So going forward, expectations are that India's pharmaceutical sector will be more and more attractive for the global investors, and we are attracting chunk of FDIs in many sectors, and FDIs now are likely to touch $100 billion in the next few years. And going forward, expectations are that India will be a major FDI hub for many sectors, many promising sectors in the global ecosystem. Yes, FDI hub also and pharma capital of the world as well. Yes, Vishal. जी, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी आ रहा है, लेकिन क्या अभी आपको लगता है कि अभी भी भारतीय दवा उद्योग है उसके सामने कुछ चुनौतियां हैं, और वो चुनौतियां हैं तो किस तरह की चुनौतियां आप देखते हैं? देखिए, जो चुनौतियां अगर हम 5-6 साल पीछे जाए तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट था वो काफी टीडियस था, लेकिन अभी जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं, जो रेगुलेटरी इन्वायरमेंट है उसमें सरकार ने बहुत सारी रिफॉर्म्स की हैं, जो डीक्रिमिनलाइजेशन ऑफ ऑफेंसेस के ऊपर सरकार काम कर रही है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक प्रोग्रेसिव ट्रैजेक्टरी में है। हर रोज रिफॉर्म्स होती हैं, हर रोज जो ऐसे कानून है या जो ऐसी
ऑफेंसेस हैं जिनका कुछ मतलब नहीं है, या फिर जो बहुत ही टीडियस हैं, जो कि बिजनेसेस को हैम्पर करते हैं, उनको सरकार हटा रही है। ऐसे ही मैं बताना चाहूंगा कि लगभग कोई 40,000 ऐसे जो रेगुलेटरी मेजर थे जो कि बहुत ही टीडियस, जो कि प्रॉब्लम्स कर देते हैं, सरकार ने पीछे उनको रिमूव किया है, जो फॉर द मोर एंड मोर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो जो रिफॉर्म प्रोसेस है वो लगातार एक निरंतर वे से आगे बढ़ रही है, और जिसका कि लोगों को भरपूर लाभ मिल रहा है, और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं वो काफी स्ट्रांग होते जा रहे हैं। और फार्मास्यूटिकल सेक्टर खास करके, जिसमें जो हमारी ग्लोबल कनेक्टिविटी है, वो बहुत ही एक लुक्रेटिव सेक्टर माना जाता है, जिसके ऊपर जो हमारा डोमेस्टिक इन्वेस्टर ही नहीं, जो ग्लोबल इन्वेस्टर है वो भी बहुत ही आकर्षित है। तो जिसकी वजह से एफडीआई में बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि हम इसमें जो एफडीआई है बहुत और भी ज्यादा अट्रैक्ट कर सकते हैं, जिससे कि सेक्टर में और ज्यादा इनोवेशन, R&D डेवलप होगी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगी, और हम अपना जो एक्सपोर्ट ट्रैजेक्टरी है उसको भी और आगे बढ़ा पाएंगे। जी अब रुक करते हैं शेयर बाजार का। प्रमुख घरेलू शेयर बाजार आज बढ़त के साथ बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 67,400 से ऊपर, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 20,000 के स्तर के ऊपर बंद हुए। सेंसेक्स 245 अंक की वृद्धि से 67,466 पर बंद हुआ। निफ्टी 76 अंक बढ़कर 20,070 पर पहुंच गया। व्यापक बाजार में बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.19% और स्मॉल कैप इंडेक्स 0.85% की बढ़त के साथ बंद हुए। The key domestic share indices today ended with a gain. The BSE Sensex finished above 67,400 level, whereas the NSE Nifty stayed above 20,000 level. The Sensex finished 245 points up at 67,466, while the Nifty appreciated 76 points and reached 20,070. In the broader market at the BSE, the mid-cap index appreciated 0.19% and the small-cap index was up 0.85%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 20 companies appreciated while 10 declined. Bharti Airtel surged 2.7%, Titan rose 2.4% and IndusInd Bank gained 1.9%. On the other hand, Mahindra & Mahindra plunged 1.3%, Larsen & Toubro declined 1.2% and JSW Steel fell 0.7%. In sectoral indices at the BSE, 15 sectors gained while 5 logged losses. Telecommunications sector surged 2.6%. Consumer durables and energy, both indices climbed 1.2% each. Oil and gas sector added 1.1%. On the other side, capital goods declined 0.5%, IT index slipped 0.3% and industrial sector fell 0.2%. The overall market breadth was positive as shares of 2,144 companies appreciated and 1,514 companies declined. A total of 126 shares remained unchanged. So, Dr. Sharma, when we talk about Sensex at 67,400 level and Nifty at above 20,000 level, it increases the confidence of the common man, of the common investor in our country. And now we see that there is now a lot of domestic investment happening. Do you think that there is this middle class realizing the merits of investing in India's equity markets rather than locking away? There was a traditional system of locking away your savings in real estate and gold. Do you see some shift happening there? Yes, true, that is happening, because a few days back we were talking about the new highs, and we were discussing that inflation trajectory is again becoming strong, and inflation is more than 7%, and that is impacting the market trajectory as investors are uncertain that what will happen in the interest rate scenario in the coming times. So we were discussing that this is inflation is only because of the escalation in the vegetable prices, and if the vegetable prices are coming down, inflation will also start softening. So that has happened. That is a great thing which has happened, that now inflation once again is softening, and expectations are that inflation will further soften to the normal levels, as already mentioned by RBI Governor, that inflation will start
softening from the month of September 2023. So we have great potential at this juncture because all the factors, all the parameters, all the macroeconomic indicators are behaving in a very, very positive trajectory, like the IIP numbers and the core infrastructure and so many other macroeconomic indicators are in the benign condition and supporting the economy at this juncture to move forward with more and more strong growth. As we have already posted 7.2% during the last financial year, and expectations are that for the current year also we will be more than 7%. Though the projections are sometimes 6.5 or 6.7 or 6.7, but many people, many forecasters are also expecting that growth will be more than 7%. So as markets are always looking ahead and markets are always forward moving, that's why the market momentum is very, very intact, and that will remain intact in the coming times also. And markets has a lot of potential to make new highs and new highs and new highs in the coming times as the growth story, as the fundamentals of the Indian economy are very strong, and we are very, very lucrative in the growth trajectory and in the export trajectory. We are the fastest moving, not only in the growth in the major economies, but we are also fastest moving in the exports also in the top 10 economies. If you go by the numbers of the International Monetary Fund, we are faster than China in the exports also, which was a major export hub during the last many decades. So going forward, expectations are that we will move ahead with more and more strong growth and with more and more expansion in the exports, as we have target of $2 trillion by 2030, of which 1 trillion will come from merchandise and 1 trillion from the services exports. Such kind of projections are making very, very positive to the corporate sector, and they are lucrative that we have a lot of projections and we have to enhance our production possibilities and expand our factory productions, and that will create employment opportunities and more deployment of the workforce in their factories. So overall momentum is very, very positive, and markets are looking ahead and making new and new highs in the trajectory of numbers. जी, वैश्विक शेयर बाजारों की अगर हम बात करें तो आज ज़्यादातर बाजारों में गिरावट का रुख रहा है, लेकिन उसके ठीक बरक्स हमारे जो घरेलू शेयर बाजार है उनमें तेज़ी दर्ज की गई है। आपने इंडिकेटर्स का जिक्र किया, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, वो भी बहुत अच्छा बता रहे हैं कि जो रिटेल इन्फ्लेशन के जो आंकड़े आए हैं या जो औद्योगिक उत्पादन के जो आंकड़े आए हैं वो भी बहुत सपोर्ट कर रहे हैं घरेलू शेयर बाजारों को। इस स्थिति में आप क्या देखते हैं, आप क्या सोचते हैं कि जो प्रत्यक्ष जो पोर्टफोलियो निवेशक हैं, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक हैं, एफपीआईज हैं, उनका रुख अब घरेलू बाजारों की तरफ, भारतीय बाजारों की तरफ कैसा रहने वाला आने वाले कुछ समय में? देखिए, उनका रुख बहुत ही पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि हमारी इकोनॉमी बहुत ही तेज गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, और खाली ग्रोथ में नहीं, बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिसमें हम बहुत ही अट्रैक्टिव है, एक्सपोर्ट्स में भी हम बहुत अट्रैक्टिव है। तो इन्फ्लेशन का जो एक बहुत ही अनसर्टेन एनवायरनमेंट था, जो पिछले महीने हमने देखा कि अगस्त में इन्फ्लेशन एक बहुत ही एस्केलेशन स्थिति में था और 7.4 पर चला गया, तो काफी वरी हुई, मार्केट को भी थोड़ा इम्पैक्ट हुआ। दो मार्केट काफी रेजिलिएंट है, फिर भी मार्केट को ऐसी अनसर्टेनिटीज काफी इम्पैक्ट करती है। तो लेकिन अभी इन्फ्लेशन जैसे हमने देखा कि 7.4 से घट के 6.8 पे आ गया है, और साथ ही जो खास करके जो फूड इन्फ्लेशन है, जो फूड इंडेक्स है, उसमें जो काफी तेज गिरावट आई है, जो 11.5% से लगभग कोई 10% से भी नीचे आ गया है। तो एक बहुत बड़ी चीज है कि इन्फ्लेशन को इतना जोरदार झटका लगना कि वो अपने उस लेवल पे सस्टेन नहीं कर पाया है। लेकिन अभी आने वाले टाइम में जिस तरीके से सब्जी भाजी के दाम और भी नॉर्मल ट्रैजेक्टरी की तरफ जा रहे हैं, जो गिरावट में है, जैसे कि हम टोमेटो की ही बात करें तो लगभग 200 रुपए से वो चल के अभी 40-50 रुपए के ऊपर पर केजी के हिसाब से वो मिल रहा है। तो एक अच्छा खासा जो गिरावट है वो देखने को मिली है, जिससे कि जो इन्फ्लेशन की जो एक्सपेक्टेशंस है उनको काफी सेटबैक लगा है कि इन्फ्लेशन अभी उस लेवल पे नहीं सस्टेन कर पाएगा, जो कि एक पॉजिटिव चीज है, जो कंज्यूमर्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए और गवर्नमेंट के लिए, कि हम आगे और रिफॉर्म्स कर सकते हैं। हम जो एक इजी मनी पॉलिसी, खास करके जो
आरबीआई ने काफी तेज गति से आगे रेपो रेट बढ़ाया था, तो उसके ऊपर आगे जो अभी पॉज चल रहा है तो कंटिन्यू रहेगा। और जो एक्सपेक्टेशन है कि आगे जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है वो नहीं होगी, तो मार्केट्स में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंटम बना है, जिससे कि मार्केट्स में न्यू हाइज अपना दिखा दिए। And sir, when we look at the Nifty, since January, Nifty is up a little over 10%, and Nifty mid cap is up 27%, and small mid cap has increased 28%. Now, this rally is very strong. And do you think that it looks like a bubble, or is it here to stay? And you think in terms of fundamentals, we are on sound footing? That is why we see this kind of growth. Because earlier, I think we've never seen this kind of a rise in mid cap and small caps. No, I don't see that there is any bubble in the mid caps and small caps, because bubbles are not able to sustain for a longer period of time, and we are observing that market momentum is continued since the last many years, and markets are making new and new highs every year. So majorly the mid cap and small caps are lucrative because the government is undertaking a lot of reforms for the MSME sector, and many companies are becoming more and more significant and lucrative for the investors, and they are progressing in their financial numbers quarter after quarter. So that's why investors are more inclined towards the small and mid caps, because these companies are showing a great growth quarter after quarter. Because large caps are stable; they move in tandem with the market, and their growth rates are not that much high as compared with the mid caps. But the corrections always happen in the mid caps and small caps also, as in the large caps. So sometimes the profit booking, when the markets make new highs, some profit booking happens. Like we observed yesterday that after making the new highs markets, there was a great correction in these mid caps, and that was a normal profit booking, not a worry that mid caps growth trajectory will decline in the coming times. That is a healthy correction which will give a momentum to the markets in the coming times, and they will recover significantly from their current levels. जी, सेक्टर वाइज बात करें तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में आज शेयरों में 2.6% का ज़बरदस्त उछाल आया है। आने वाले समय में आप टेलीकॉम सेक्टर के प्रदर्शन को कैसा देखते हैं, और क्या इसमें क्या संभावनाएं आप देख रहे हैं? देखिए, जो हमारी प्रोग्रेस है, जो हम आगे 3G, 4G, 5G के ऊपर हम आगे हमारी एक्सपेक्टेशंस है कि हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है और भी ज्यादा स्ट्रांग होगा, और हमारी जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं वो और आगे मुनाफा कमाएंगी। तो उसके जैसे मैंने पहले बताया कि हर एक सेक्टर ही लुक्रेटिव है। कई बार चर्निंग होती है एक सेक्टर से निकल के, जिस सेक्टर में ज्यादा ग्रोथ नहीं होती तो उसमें लोग इन्वेस्टर जो है उधर शिफ्ट करते हैं, तो दैट हैपन्स एवरी टाइम। तो उसी वजह से कई बार किसी सेक्टर में प्रॉफिट बुकिंग आती है, दूसरे में बाइंग आती है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत कई सेक्टर्स में बहुत ज्यादा अंतर है कि कोई सेक्टर बहुत ही लो लेवल पे रहेगा और कोई बहुत, लेकिन भारत का हर एक ही सेक्टर जो है वो बहुत ही लुक्रेटिव है, ये मैं बताना चाहता हूँ। और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इज वन ऑफ देम दैट इज इन लाइमलाइट नॉट ओनली फॉर द लास्ट फ्यू इयर्स बट सिंस द लास्ट मेनी इयर्स। जो हमारा टेलीकॉम सेक्टर है वो बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहा है। जी, नजर डाल लेते हैं रुपए के प्रदर्शन पर। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 82 रुपए 98 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 104.71 पर कारोबार कर रहा था। रुख करते हैं वैश्विक शेयर बाजारों का। सबसे पहले एशियाई और यूरोपीय शेयर बाजार। एशियाई शेयर बाज़ारों की बात करें तो आज अधिकतर एशियाई शेयर बाज़ार गिरावट के साथ बंद हुए हैं। हालांकि सिंगापुर के स्टेट्स टाइम्स इंडेक्स में 0.14% की बढ़त दर्ज हुई। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.45% नीचे आ गया। जापान का निकेई सूचकांक 0.21%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.07% और हांगकांग का हैंगसेंग 0.09% की गिरावट के साथ बंद हुए। यूरोपीय शेयर बाजार अंतर्दिवसीय कारोबार में गिरावट में चल रहे थे। लंदन का FTSE 100 0.3% नीचे चल रहा था। फ्रांस का कैक 0.68% और जर्मनी का डेक्स
6% नुकसान के साथ कारोबार कर रहे थे। How do you view the Asian stock markets? Because we also understand that China's economy now seems to be, although there aren't very specific data coming from there, but there are, speculation. There is a speculation that it's not doing well. And in the light of Chinese economy not doing well, where does it... is it is it the reason for us to be joyous, or does it have a ripple effect over the world? Yes, because in Asia, the business cycles are more interconnected in the Asian economies like the China, Vietnam, Singapore, Malaysia, Indonesia. Their business cycles converge significantly, because if some country is facing some slowdown, then the another also follows same suit. So, but our model, India's economic model is decoupling, and like the world was decelerating during the time of Corona significantly, but we recovered significantly, and we were more and more lucrative. So I think China's growth is now slowing, and that has started from the last decade, that the economy is not that much in the progressive trajectory. And now if you go by the numbers for the next 5-6 years, the average growth of China's GDP will be 4.1%. Considering from 2023 to 2028. And India will grow more than 6% on an average. And I think the growth will be, average growth will be at around 7% as the data and the fundamentals are showing. But China's economy is significantly slowing as compared with India. A differential of 2 to 3 percentage points is happening in the growth trajectory of both the countries. So all the Asian economies, particularly the East Asian economies, are significantly convergent with their growth numbers, and sometimes that is the trajectory that other economies also face, and like the economies which are strongly connected with the Chinese economy. Right. Let's take a look at the U.S. markets now. Well, Wall Street stocks ended lower as Oracle shares tumbled more than 13% after a weak forecast, and surging oil prices deepened worries about persistent price pressures ahead of crucial inflation readings this week. Oil prices jumped more than 1%, building on a recent rally and stoking worries that sticky inflation could mean U.S. interest rates stay higher longer in the aftermath of strong economic data. The tech-heavy Nasdaq Composite Index fell 1%, S&P 500 lost 0.5%, and the Dow was down 0.08%. And now a look at the oil. Well, supply cuts by oil-producing countries to keep crude prices elevated. Crude oil prices have gained momentum since July after Saudi Arabia, the world's largest producer of crude oil, slashed supply by additional 1 million barrels per day. Crude prices were trading above $85 per barrel in recent weeks. In intraday trade, Brent crude was trading at $92.50 per barrel. West Texas Intermediate crude price was at $89.33 per barrel when reports last came in. How do you view the oil prices? Are we comfortable at Brent crude trading at $92.50? I think because oil prices are always volatile, and there is no great price recovery in the price discovery in the crude oil prices, and they can vary from the low to significantly high. Right. But at this number, $92 per barrel is, I think that price will not sustain for longer, because global growth overall is not that much lucrative, and there is significant deceleration as compared with last year. Right. So the prices, I think, will remain somewhere between $80 to $87-88 on an average. Right. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर अनुबंध के लिए आज सोना 58,594 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। समाचार तैयार किए जाने तक दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 354 रुपए टूटकर 71,580 रुपए प्रति किलोग्राम पर चल रही थी। एसपी शर्मा जी, आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े और इतनी उपयोगी चर्चा में आपने भाग लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया।
And friends, before we close, as a reminder, the headlines. Well, RBI asks banks, NBFCs to release property documents within 30 days of loan settlement or pay compensation. Cabinet approves foreign investment of up to 9,589 crore rupees in Suven Pharmaceuticals Limited. And Nifty ends above 20,000. Sensex rallies for the 9th session, jumps over 200 points. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is Lalima Aneja Dang and Vishal Sharma bidding adieu. Namaskar. नमस्कार. Market Mantra.